the four subjects, and those are our administrative, maybe company law, family law, TOPA, Property Act, similarly. जो सबसे डिफिकल्ट है ना पहला वो हम लोग करेंगे क्योंकि ये ऐसा हम लोग ओके सो लेट्स बिगिन अभी कोर्स ऑब्जेक्टिव वही जो सोनी का जो नोट्स दी है आज गिवन दैट वी आर विल बी स्टडिंग द कोर्स ऑब्जेक्टिव इज to nature control the delegated legislative power, regulation of discretionary power, general principle, administrative education. हमको देखो 1 घंटे में पूरा करना है सो लेट अस गो स्पीड मॉडल 4 मॉडल है इसमें पहले मॉडल में सब हिस्ट्री बताया हुआ है दूसरे मॉडल में उसका ये जनरलाइज किया हुआ है मॉडल 2 में कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सेफगार्ड्स देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड मॉडल 3 में है रिसेंट वन दैट इज ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डॉक्ट्रिन है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन देन प्रोपोर्शनलिटी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी liability different kind of then fourth model is a corporation and public undertaking public corporation liabilities control लोकपाल लोकायुक्त उसका एक्ट 2013 का एक्ट महाराष्ट्र लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट लोकपाल एंड लोकायुक्त लोकपाल इज एट द सेंटर लोकायुक्त इज एट आयुक्त आई मीन स्टेट लेवल और उसमें भी स्टेट का दो टाइप आएगा लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त दैट इज असिस्टेंट दिस वन then vigilance system vigilance commission then corruption act then you right to information um, so let us go one by one with the model हमको देखो 1 घंटे में पूरा करना है now it is 15:24 तो 16 4 4:15 के पहले पूरा करना है पौना घंटा में तो पहले मॉड्यूल 1 इज टॉकिंग अबाउट लेजी फेयर टू द वेलफेयर स्टेट लेजी फेयर मतलब क्या होता है लेजी फेयर होता है एक और दूसरा होता है अबाउट द प्रिंसिपल्स सो वेलफेयर स्टेट लेजी फेयर एंड वेलफेयर स्टेट लेजी फेयर क्या होता है तो पूरा कंट्रोल जो होता है गवर्नमेंट अपने पास कंट्रोल नहीं रखता है लेजी फेयर में द बिजनेसमैन उनके पास पूरा कंट्रोल दिया हुआ रहता है गवर्नमेंट जो कोर्ट है वो ज़्यादा कंट्रोल करता है एंड इज समॉट ओपन काइंड ऑफ सिस्टम कि चलो गवर्नमेंट सिर्फ देखता रहेगा दैट फिर लॉ बनाएगा और देखता रहेगा कि क्या हो रहा है करके कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रीडम रहता है फ्री एंटरप्राइजेस मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा उसमें एक्सटर्नल इसमें एग्रेशन जस्टिस कलेक्टिव टैक्सेस वगैरह सब उसमें है उसमें बट डिसएडवांटेज इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सोशलिस्ट मूवमेंट लाइक इन रशिया रशिया में ये सब लेजी फेयर है मतलब मोस्टली बिजनेसमैन ही कंट्री चलाते हैं दे मेक द पॉलिसीज उनके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनता है तो इसके भी 3 पार्ट है यू नो एवरी गवर्नमेंट हैज अ 3 विंग्स दैट इज अ लेजिस्लेटिव रूल मेकिंग एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटिंग एंड एडजुडिकेशन दिस वन तो now the administrative part, administrative, basically, branch of public law, relationship individual with the government. So function procedures आएगा definition of what is the definition of administrative law इनमें पूछा जाता है. It is a administrative law deals with the part and functions of administrative authorities. Procedures to be followed by these authorities in the exercise of such power. Remedies available to the aggrieved person when authorities abuse of the powers. नाउ अकॉर्डिंग टू द एवर्जनिंग क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देन देयर इज अ वेड दूसरा एक्चुअलिस्ट है तो वेड क्या बोलता है इट इज अ लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स गवर्नमेंट का पावर्स जो कंट्रोल करता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलते हैं so there is a K.C. Davis. What she says, it is a law concerning to the powers and procedures of administrative.
Everything is related to administration. Now, what administration law deals with? क्या करता क्या administration? Who are the administrative authorities basically? It's a power and nature, it's a limitations, restrictions, procedures, remedies, then nature and scope of administrative law. उसका administrative law का scope क्या है, nature क्या है? It is not a codified law. Administrative law ऐसे कोई वर्ल्ड में अलग से administrative law है. There are statute, constitution, ट्रिब्यूनल सारा कुछ है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करके कोई सेपरेट ब्रांच नहीं होता है. इट इज अ कस्टमाइज जो स्लोली ओवर अ पीरियड डेवलप हो रहा है फॉर अ बेनिफिट ऑफ पीपल. इट इज अ जजमेंट लॉ बेसिकली जो प्रेसिडेंस होता है अकॉर्डिंगली एंड इट गोज ऑन द लॉ गेट्स डेवलप्ड and for the welfare of the society for the people. It deals with the organization. It is concerned with the official actions और रीजन कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है उसमें. कंट्रोल मैकेनिज्म जुडिशियल रिव्यू विदाउट बाउंड्स एंड मेड इफेक्टिव उसका कंट्रोल अथॉरिटीज है इंडिविजुअल राइट्स है उसमें दिया पब्लिक नीड्स इमर्जेस एंड डेवलप्स इमरजेंस एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ emergence and develop wherever and whenever any person becomes the victim of arbitrary exercise branches which governs the activities of एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना वो थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा डिफिकल्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी. फंडामेंटल राइट्स रीड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल फंक्शन पब्लिक कमीशन ट्रिब्यूनल्स एक्सेट्रा एक्ट्स एंड स्टैट्यूट कंपनीज लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ओम्बड्समन लोकपाल लोकायुक्त. अभी हम बाद में देखेंगे ट्रिब्यूनल क्या है ओम्बड्समन क्या है लोकपाल लोकायुक्त क्या है. दैट इज एग्जीक्यूटिव ब्रांच आर्टिकल 123 एंड 213 बाय दैट इज by the president, the special power of president. Public regulations and circulars, orders, directions, everything comes under the administration. Or administration basically sources of administrative law, constitution, acts and statute, ordinance, rules, regulation, orders, direction, bylaws. Bylaws मतलब semi government authority like society bylaws उसमें आया to the from the top to the bottom whatever is uh, the way by which government functions is called administration. Then judicial decisions are there, schemes, different schemes are there. That is also called the administration. Judicial decisions. Now comes to the conditional legislation and administration direction. Conditional legislation. Relationship between administration and constitutional law. So administration runs as per the constitution. Relationship between administration law is not clearly marked out, but fact remains that the two are overlapping in several aspects. Now there is a Venn diagram, like a fishbone diagram, then watershed area. Now coming to the article, there are different articles, and that are Article 32, Article 136, 32 and 226 तो आपको पता है. 32 is for the Supreme Court and 226 for the High Court appeal. You can go against any fundamental right or writs you can apply. Article 300, 227, 301. And similar now अभी हमने देखा difference between constitution and administration. Constitution is made at the 1947 और उसमें amendment होते रहता है by parliament. New rules are made. And administration comes under the constitution. Now let us see the similarities. Both are public law basically, and both deal with the distribution and exercise of the government powers. Where constitution law ends, the administrative law begins. Constitution law end होता है वहाँ पे मतलब at the bottom level. जैसा our PM Modi has said that benefits should go to the root, last person. A similar way. Imposing boundaries and accountability, the human rights. And let us see the difference between the or the similarity between the constitution and administration law.
According to Holland, constitution law describes various organs at rest. Ivergenin क्या बोलता है? It deals with fundamentals. The majority of organs, organizing powers, rights, deals with the rights. Constitution basically deals with the rights of people. It's a supreme law of land. Administration क्या है? It is a government in motion जो daily functioning है government का. That comes under the administration. Then it is the details. छोटा छोटा चीज है उसका details. Policies are made in constitution or in the law, but the implementation comes under the administration. It is anti-authoritarian म्हणजे administration मतलब authority नहीं वो as per the requirement of people it changes its functioning changes as per the public need and it is subordinate to constitutional law. Reason for growth of administration law. Now, why administration law grew basically over a period. See, आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन है स्टैट्यूट से अलग अलग लॉज है फिर एडमिनिस्ट्रेशन लॉ ये कहाँ से आएगा दैट टू इज नॉन कोडिफाइड. तो ऐसा है कि मौर्यन और गुप्ता टाइम से ये चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एडजुडिकेशन मतलब द पावर इज गिवन टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स टू द गुड एक्सटेंड कि आप मतलब हर एक चीज के लिए राजा के पास मत देखिए उसके पास मत जाइए वो एट द लोकल लेवल you should problem the address the problems because at different levels the problems are different of the people and then you have to solve accordingly. Then there comes a welfare state. The welfare state क्या है? During 10th and 20th century ये चालू हुआ welfare state का पहले हमने देखा था. We started with the different laissez-faire. Now we are coming to the laissez-faire मतलब ज़्यादा से कंट्रोल हमारा कोर्ट ज़्यादा कंट्रोल करेगा लेजी फेयर में. ओनली द पार्लियामेंट जस्ट विल मेक लॉ एंड जस्ट फॉरगेट इट वो लॉ करेगा और आप इम्प्लीमेंट कर लो उसके. वेलफेयर स्टेट में ऐसा नहीं है एंड कोर्ट विल हैंडल तीन ब्रांच जो है. तो लेजी फेयर में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज अ लॉ मेकिंग अथॉरिटी and that is parliament and the constitution that is and the court supreme court ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. दिस लेजिस्लेटिव बॉडी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो ज़्यादा उसमें पिक्चर में नहीं आता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. वेर एज इन वेलफेयर स्टेट द मेन बॉडी इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो डेली बेसिस पे लोगों से इंटरेक्ट करता है. दे आर गिवन सम special powers or we can say discretionary powers they should act in benefit of people. So dispute between say employer employees है industrial disputes है labor dispute है और कोई family dispute तो separate tribunals are made to the handling the their disputes. इनएडिक्वेट लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेटिव का जो अपना काम हो गया पूरा हो गया उसके बाद में स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज नॉट कोडिफाइड and so there is enough scope of modification as per modification it is as per requirement. तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगा वैसे वैसे वो मॉडिफाई होते जाएगा ऑफ इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. इट इज मोर फ्लेक्सिबल रिजिड इट इज नॉट रिजिड लाइक पार्लियामेंट्स एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या कोर्ट आपको each and every word they will take into consideration. Administrator being non codified उसमें कोई दैट इज वेलफेयर स्टेट लोगों के भलाई के लिए किया थोड़ा सा लॉ फ्लेक्सिबिलिटी भी किया जाता है. इंक्रीजिंग डिमांड्स फ्रॉम द पीपल लोग ही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो मतलब जो फ्लेक्सिबल हो उनको कंफर्टेबल हो थोड़ा सा एज पर रिक्वायरमेंट चेंजेस किया जाओ वैसे लॉ हाँ लोग प्रेफरेंस दे कर रहे हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स लिस्टिंग लाइसेंसिंग रेट फिक्सिंग ये सब उसमें आ रहा है प्रिवेंटिव मेजर्स में. इन्फोर्समेंट ऑफ सस्पेंशन रिवोकेशन और कैंसलेशन डिस्ट्रक्शन. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन increasing the population creates burden on the legislative process. लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस जब पॉपुलेशन जैसे बढ़ता है तो उसके लिए भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एट द लोकल ग्राउंड लेवल रूट लेवल पे काम करता है वो काम में आता है. जस्ट फ्यू केस लॉज आर हियर. डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पेंशन के बारे में एक केस था. तो
arbitrary, discriminatory, ultra various of the discriminatory policies. In the Air India versus Nargesh Mirza, एक एयर हॉस्टेस शी वॉज प्रेग्नेंट, यू मस्ट बी नोइंग, सम आप पूरा हमारे जमाने की, कि एयर इंडिया में उस टाइम पे था, एक रूल निकला था कि जो प्रेग्नेंट है एयर हॉस्टेस उनको काम से टर्मिनेट किया जा रहा था। तो बाद में कोर्ट पे केस गया सुप्रीम कोर्ट में, and they said that is a violation of article 14 15 21, 14 मतलब 14 15 हो equality, and 21 is a life, right to life and liberty। तो ये आर्बिट्ररी नेचर का डिसीजन दिए, एंड देन इट वाज एबॉलिश्ड, लेटर ऑन रिपीट। देन डीटीसी एंड मजदूर संघ, टर्मिनेट 3 महीने में नोटिस में टर्मिनेट कर देना है, परमानेंट एम्प्लॉय को कर देते थे। तो वो ज़्यादा अल्टाविरस कैपेसिटी करके वो रिपील हो गया। इन लाभचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, in this case prejudice for the Jain temple were as follows: 21 years चाहिए, then contribution 500 or more, living in the state for 10 years। it was arbitrary, ये जो मतलब मैनेजमेंट का जो डिसीजन था वो आर्बिट्ररी एंड डिस्क्रिमिनेटरी था। सो इट वाज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 में इक्वालिटी, बेसिकली सबको आप इक्वल चांस देना है जैन टेम्पल में आने के लिए और जो कुछ फॉर्मेलिटीज करने के लिए। नरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, देन सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन आया कहाँ से? इट इज ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, इट डील्स विद द पावर्स एंड ड्यूटीज, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का सोर्सेस है। देन इट इज अ चेंज इन द कंसेप्ट, डेली बेसिस पे थोड़ा 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 चेंज, इनएडेक्वेसी ऑफ जुडिशियल जुडिशियल सिस्टम का जो प्रोसेस है वो लेंथी प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, सॉर्ट ऑफ हरासमेंट टाइप प्रोसेस है। एक बार आदमी गया तो उसका 5 6 साल तो उसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, जस्टिस मिलेगा नहीं, एक्विट हो रहा है कि कन्विक्ट हो रहा है वो भी क्लियर नहीं, हैंगिंग सिचुएशन है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिचुएशन है कि जो फास्ट ये सोशलिज्म पैटर्न उसमें आ गया। रीजन फॉर एक्सपांशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्यों एक्सपांड, 20th सेंचुरी में क्या हो रहा है, उसका फंक्शंस, मॉडर्न गवर्नमेंट आ गया है, तो लेजी फेयर जो था वो वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो गया। लेजी फेयर मतलब जैसा आपको पता है कि एक बार मतलब एज गो एज पर द लॉ, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, लेजिस्लेचर बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ बनाएगा, फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो केसेस जाएगा सुप्रीम, मतलब कोर्ट्स काम करेगा, दे विल गिव डिसीजन। That was a lengthy process, though it was process, but that was as per the process lengthy process। सो लोगों को उसमें बहुत कठिनाई आने लगी, तो इट वॉज अ सिस्टम। तो उसके लिए वेलफेयर स्टेट मतलब सम ऑफ द स्टेजेस वी कैन बाईपास, एंड लोगों को डायरेक्ट जस्टिस मिले या उनका काम फास्ट हो, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना है डेली बेसिस पे, इक्वालिटी लाना है, गांव गांव में लास्ट पर्सन तक उसका बेनिफिट पहुंचना है। रेगुलेशंस, ओनरशिप, production and distribution of good governance, good and government, ever widening front उसका बढ़ते जाएगा। मेडिसिन है, प्यूनिटिव टू प्रिवेंटिव, मेडिसिन में कैसा होता है, प्यूनिटिव नहीं होता है, प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट टाइप, सो बाद में पनिशमेंट देने से अच्छा अभी प्रिवेंटिव आप उनको बताइए, अवेयरनेस ऑफ द पीपल, जैसा ट्रैफिक डिसिप्लिन है वहाँ पे, रादर देन आपने सिग्नल ब्रेक किया तो बाद में उसको पनिशमेंट देना है, रादर देन यू एजुकेट देम कि कैसे होता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है, how it is betterment of driver as well as the pedestrian। So that is a slowly that is a welfare state, लोगों का भलाई के लिए करना है हमको, उनको पनिशमेंट देने के लिए नहीं करना है। वो प्री एरा नहीं, प्री इंडिपेंडेंस एरा नहीं, अभी नया एरा आ गया, इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव एक कंसेप्ट आ गया, ड्रॉइट एंड नो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब फॉर द पीपल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। Now let us go to the constitution of India। ये ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली, जो हमने अभी डिस्कस किया कि रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूट, इट इज एडमिनिस्ट्रेशन, द मोर फोकस एंड द मोर पावर्स और लिबर्टी or discretionary power is given to the administrative officers to resolve the issues at the faster pace
एंड एट द बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल. इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों को कुछ भी करने दो, बट विद द कंट्रोल जो भी है वो फास्ट डिसीजन होना चाहिए. दे शुड गेट द बेनिफिट्स. दैट इज कॉल्ड द ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव. इज फ्रांस कंसेप्ट. तो फ्रांस में से आ गया वो कंसेप्ट इंडिया में. वो नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम से, मतलब आप समझो अभी कितना साल हो गए. 400 500 800 साल हो गए, 700 800, क्योंकि वो टाइम से वो उनके यहाँ पे फ्रांस में कंसेप्ट है दैट नेपोलियन बोनापार्ट बोलता था मेरे पास मत आओ हर एक चीज लेके, ये क्या करना है, ये क्या करना है. सो व्हाट ही डिड, उसका वो जो एम्पायर था उसको बड़ा करना था, एक्सपांड करना था. जहाँ जहाँ पे एम्पायर करता था वहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे तो उनको पावर देते थे. एज पर रिक्वायरमेंट यू सी दैट पीपल आर गेटिंग benefited. That is basically Droit administrative. Now, Constitution of India. It is a written constitution of written in the, and this is the longest and lengthiest constitution. तो हमको सबको मालूम है. तो आपको ग्रैंड नॉर्म हमने सेमेस्टर 1 या 2 में देखा. ग्रैंड नॉर्म मतलब उसके ऊपर कोई नहीं, सुप्रीम पावर, सॉवरेन पावर. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड आर्टिकल 13 क्या डिफाइन करता है? लॉ, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, नोटिफिकेशन. आर्टिकल 13 में दिया हुआ है कि ये क्या होता है, लॉ क्या होता है. वो तो ऑर्डर होता है, बाय लॉज, रूल्स, नोटिफिकेशन, रेगुलेशन, ये सारा होता है ना. स्टैच्यूट. स्टैच्यूट क्या है? इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. सोर्स. ऑल स्टैच्यूट हैव टू कंफर्म कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो प्रिंसिपल सोर्स, वैसे ही स्टैच्यूट आएगा. वही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ब्रांच को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. The power, procedures, composition, tribunals, these are the things. Ordinances, what is ordinance? When 123 and 213, President can promulgate during recess of Parliament. मतलब recess Parliament जब नहीं होता है, there is no Parliament sessions are going on, or during the दो पार्टी, एक पार्टी से दूसरा पार्टी चेंज हो रहा है, there is no Parliament that time. President has a special power. Promulgate is a special power to make the ordinances. Ordinance है टेम्पररी लॉज. ऑर्डिनेंस जिसको बोलते हैं, वो बाद में लॉ में कन्वर्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. का मैक्सिमम टेन्योर होता है 6 months. सो दैट इज आर्टिकल 123 एंड 213. आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट का पावर डिफाइन किया हुआ है. आर्टिकल 213 में गवर्नर का पावर डिफाइन किया है, और गवर्नर कैन प्रोमलगेट. सो अभी पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा सब राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स. पावर इज सब्जेक्टेड टू लेजिस्लेटिव कंट्रोल. जो जो भी अभी अमित शाह और मोदी सर ने बोला था पार्लियामेंट में, दैट व्हेन राहुल गांधी सेड दैट सेक्रेटरीज के पास कुछ ओबीसी कैटेगरी के नहीं है, 2-3% ही है. सो अमित शाह सेड दैट मेन पावर इज विद कैबिनेट मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर्स, नॉट ऑल्सो पार्लियामेंट. तो स्लोली ये सब कंसेप्ट जो है ना, सो चेंज होते जाते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर्स आर सम 15% ऑफ आपका एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है. सो दे हैव द मोस्ट पावर्स ऑफ द मेकिंग लॉज. उनके खास लोग होते हैं वो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वो ग्रुप में. देन देयर कम्स एक केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आरसी कोपर एंड यूनियन ऑफ इंडिया, बैंक नाशनलाइजेशन का एक केस था. देन इमरजेंसी पावर एक्सरसाइज मालाफाइड. अगर वो मालाफाइड मतलब विद बैड इंटेंशन. एसआर बोम्मई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ failure of constitutional machinery under 356 is subject to judicial review. मतलब आपने इमरजेंसी घोषित किया है, इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, तो उसका सब्जेक्ट 356 के अंडर, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है बाद में. ये सब लॉज आर गेटिंग मॉडिफाइड. उसका कंसेप्ट चेंज होते रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इन बेनिफिट ऑफ पीपल. एक के ऊपर दूसरा बैठा है होता है. लेजिस्लेटिव, देन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, कोर्ट, लॉ मेकिंग ब्रांच,
ये सब एक दूसरे के ऊपर हावी होते रहते हैं। हम कभी देखते हैं कि चंद्रचूड़ साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनका कभी पावर ज़्यादा रहता है, तो उनको ये करने के लिए फिर प्राइम मिनिस्टर का पावर कभी ज़्यादा दिखाया जाता है। नहीं, आपने तो सुप्रीम कोर्ट में एक लॉ केस को बाईपास ये कर दिया, रूल कर दिया, तो हम उसको रूल आउट कर देंगे, तो हम नया ऑर्डिनेंस लाएंगे। वो किया तो फिर कुछ ना कुछ होते रहता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया का, ये जो तीन ब्रांचेस हमारा, लॉ मेकिंग ब्रांच, कोर्ट्स एंड एग्जीक्यूटिव, तीनों ब्रांच जो है एक दूसरे को बैलेंस करते रहेगा। इट इज नॉट उनके बीच में कुछ कॉरल है, झगड़ा है, ऐसे नहीं है। और तीनों को इसलिए पावर दिया है, इंडिपेंडेंट एंड कंबाइंड पावर की, जो एक दूसरे को कंट्रोल करते रहे, अदरवाइज एक ही ब्रांच सबसे बड़ा हो जाएगा। So now let us see case law. Administrative law is a judge-made law. Administrative ये सब कुछ से जजेस जो प्रेसिडेंस देते हैं उसके ऊपर होता है। न्यू नॉर्म्स बोल्ड, कोर्स इज टू फोल्ड, रेगुलेटिव एंड फॉर्मुलेटिव, रेगुलेशन भी करता है और फॉर्मेशन भी करता है, मतलब इम्प्रूवमेंट भी होता है उसमें। Then the reports of committee and law commission, scientific, industrial, technological, sub-report, modernization of technology, cultural conflict, hazardous urbanization, ruthless exploitation, varied social, economic, political ramification, administration and law regulating. ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स है उनका रूल चलेगा, ब्यूरोक्रेसी चलेगा। ट्रू रूलर, वेयर देन एलेज टू बी द ट्रू रूलर, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं हम ही ट्रू रूलर है। सिविल सर्विस जो सर्वेंट्स होते हैं वो, उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, वो जो रेड टेपिज्म जिसको बोलते हैं। Then executives was given freedom by parliament to make delegated legislation, थोड़ा सा उनको फ्रीडम दे दिया एग्जीक्यूटिव को। डिस्क्रेशन बाय रीजन ऑफ एक्सट्रीमली वाइड पावर्स एग्जीक्यूटिव को दिया, बट दैट इज ऑल्सो अगेन डेंजर, ज़्यादा पावर देना, ये वो अपने मन से अलग अलग डिसीजंस लेंगे। Then inadequate publication and control, lacuna, inability of subject to sue the crown in the tort, control and supervision without effective control. Crown Proceedings Act 1947 में आ गया, मतलब क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट मतलब क्राउन मतलब कौन, किंग, किंग और क्वीन, किंग और क्वीन भी लायबल हो सकता है टॉर्ट के लिए। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग हो, क्रिमिनल रॉन्ग हो, वॉट एवर, बट दिस लॉ वॉज ब्रॉट इन टू कंसिडरेशन एंड पास इन 1947 कि क्वीन और किंग के ऊपर भी प्रोसीडिंग्स हो सकता है इफ दे डू एनी मिसchief, मालाफाइड इंटेंशंस एक्ट जो भी करते हैं। सो दे वेर ऑल्सो ट्रीटेड इक्वली, ऐसे नहीं कि उनको कोई इम्यूनिटी नहीं था, इम्यूनिटी नहीं दिया हुआ है, बट दैट स्टार्टेड वेरी मे बी 70-80 years बैक, पहले तो ऐसे नहीं था। देन आस्ते आस्ते सब कंसेप्ट चेंज होते गया विथ ट्रिब्यूनल्स एंड बेसिकली दिस इज लाइक डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन जैसा थियरी, इवोल्यूशन होते रहता है स्लोली स्लोली। मंकी से ह्यूमन हो गया, मतलब एनिमल एडॉप्शन हो गया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो गया। जैसे जैसे रिक्वायर्ड है वैसे वैसे पॉलिसी मेकिंग चेंजेस वो करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो स्टैगनेंट हो जाएगा। तालाब का पानी एक ही जगह रुक गया तो क्या होगा, ओवर अ पीरियड उसमें कीचड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। तो इट शुड बी फ्लोइंग, जो कंसेप्ट है सेम कंसेप्ट इज हियर इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि ये फ्लोइंग होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तो ही लोगों का, इट इज फॉर अ वेलफेयर स्टेट, इट विल बिकम अ वेलफेयर ऑफ पीपल। लोकसभा कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, राज्यसभा कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। नाउ कम टू क्वासी लेजिस्लेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, क्वासी, क्वासी मतलब पर्टिकुलर ब्रांच पर्टिकुलर देखेगा, आपने देखा है क्वासी जुडिशियरी, और जैसे क्वासी लेजिस्लेशन है। क्वासी लेजिस्लेशन मतलब, क्वासी मतलब पर्टिकुलर, पर्टिकुलर ब्रांच को ही हैंडल करेंगे। डायरेक्शन, एज पर डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। रीजंस फॉर, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि उसका एडवांटेजेस है। इट इज बेसिकली फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल, पॉजिटिव पॉलिसीज आ रहा है, वेलफेयर स्टेट हो रहा है, जुडिशियल सिस्टम हो रहा है, इन एडिक्वेसीज है वो सब रिमूव कर रहे हैं, डिस्प्यूट्स है वो
फास्टर वे में सॉल्व कर रहे हैं। अर्लियर सिस्टम वॉज वेरी स्लो, मतलब कोर्ट का सिस्टम है स्लो, कॉस्टली, इनएप्ट, कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मेलिटी आपको करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप फास्ट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री के लिए क्या हो गया फिर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स आ गए, लेबर कोर्ट्स आ गए, बिकॉज इंडस्ट्रीज वेयर डेवलपिंग इन यूरोप। ट्रिब्यूनल्स आ गए तो डायरेक्ट इमीडिएट कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। The legislative process was also inadequate and no time and technique to deal all the details। अभी देखो इतने सारे कोर्ट में क्रोर्स ऑफ केसेस पेंडिंग है, इंडियन कोर्ट और इन वर्ल्ड वाइड ऑल्सो। तो उसको फास्ट कैसे किया जा सकता है, तो हर बार कोर्ट पे जाएंगे, वो फॉर्मल है, कोर्ट पे जाएंगे तो आपको फॉर्मल ही हो जाएगा। जैसे हम लोग टीचर हमको या प्रोफेसर हमको स्कूल में सिखाते हैं, कॉलेज में सिखाते हैं, यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं। सो दो फॉर्मल वे में जाएंगे, सिस्टमेटिक वन आफ्टर अनदर, लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज वो सिखाएंगे। बट वही हमको अगर यूट्यूब में सीखना है या कोई फ्रेंड्स के साथ सीखना है या क्लासेस में सीखना सीखना है ट्यूशन में, वो तो फास्ट हो जाएगा। आई मीन दैट इज अ वेलफेयर स्टेट यू कैन से। एंड लेजी फेयर मतलब जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में सिस्टमेटिक, उनका भी अपना एक दे वो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टैट्यूट के तहत उनको चलना है। वो ज़्यादा इधर उनका उनको वाइड नैरो रेंज में अपना काम करना होता है। टाइम टाइम उनके पास दिया हुआ वैसा ही काम करना है, उतना ही पोर्शन सिखाना है। वेर एज इन ट्यूशंस और यूट्यूब लेक्चर्स इट इज़ अ बेनिफिट, आपका बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझेगा। सो दैट इज मेनली डिफरेंस बिटवीन अ लेजी फेयर एंड वेलफेयर स्टेट। तो आप समझ गए ना क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली। दैट इज कॉलेज लेक्चर्स एंड प्राइवेट ट्यूशंस और यूट्यूब लेक्चर्स, वो उसका फर्क है। देन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, लेबर कोर्ट्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ये सब आ गया। देन टायर्ड एंड देखें रूल्स, रूल्स कैन बी मेड टायर्ड फॉर सम टाइम, ट्राइड है, टायर्ड है सुनने, डिफेक्टिव कैन बी अल्टर्ड एंड मॉडिफाइड। लेजिस्लेशन इज रिजिड, लेजिस्लेशन मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, दिस इज रिजिड इन कैरेक्टर वाइल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इज फ्लेक्सिबल। लॉ बनेगा, पार्लियामेंट में पास होगा, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, इधर जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा आपका, फिर रिवीजन होगा, ये होगा वो होगा, हल्ला गुल्ला होगा अपोजिशन का, फिर पास होगा, फिर इम्प्लीमेंट होगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फटाफट फटाफट फ्लेक्सिबल, कोई माइनर चेंजेस किया, बट दे हैव टू अधेयर टू स्टिक टू द स्टैट्यूट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, नो डाउट। देन Freeman, like जो jurist है, Freeman says inspection and grading of meat answers the consumer's need more adequately than the right to sue the seller after the consumer inquired। मतलब कंज्यूमर ने कंप्लेंट करने के बाद आप उसको पनिशमेंट करेंगे मैन्युफैक्चरर को, फिर जेल करेंगे, सॉर्ट ऑफ एग्जांपल, दैट इज अ लेजी फेयर बोल सकते हैं। मतलब कोर्ट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करना है। उससे अच्छा आप वेलफेयर स्टेट, मतलब कंज्यूमर को अवेयर करेंगे, फिर मैन्युफैक्चरर को अवेयर करेंगे, आईएसआई मार्क लाएंगे। सो मैन्युफैक्चरर्स पहले से ही अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड, बीएसआई स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वो सब हायर पहले से स्टैंडर्ड प्रिवेंटिव करना है। दैट इज अ प्रिवेंटिव वर्क डन इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। एंड बाद में जो करना है, होने के बाद पनिशमेंट देना है और कोर्ट करना है, तो दैट इज कॉल्ड लेजी फेयर। लेजी फेयर मतलब एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है। आदि वही उसी का थोड़ा सा एक मॉडिफाइड वर्जन है ये जो हम लोग लेजी फेयर एंड वेलफेयर स्टेट, का मॉडिफाइड है रेड लाइट थियरी एंड ग्रीन लाइट थियरी। ये भी ऑलमोस्ट सेम है। रेड लाइट मतलब तुम्हारा लेजी फेयर एंड ग्रीन लाइट मतलब वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट लोगों का भलाई के लिए, उस नाम ही सजेस्ट कर रहा है। ग्रीन लाइट, रेड लाइट मतलब लोग एकदम कंटाल जाते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, भागो, कोर्ट में जाओ, ये करो, छोटा छोटा चीज़ के लिए होने के लिए। तो अभी वो रिलेटेड से द रेड लाइट थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेजी फेयर इज अ लीगल सॉवरेनिटी, मतलब लीगल भी सबसे ऊपर है। ढाई से क्या होता है, गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लीगल रूल्स लेट डाउन बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो रूल करेगा वैसे ही आपको एक्ट करना है। रेड लाइट थियरी है। रेड लाइट थियरी के मुताबिक रेड लाइट थियरी वेरी, मतलब उसका प्रिंसिपल्स क्या है रेड लाइट थियरी का।
कोर्ट्स आर द प्राइमरी वेपन, जो भी करना है कोर्ट में जाओ, जो भी करना है कोर्ट में जाओ, आपको राइट्स मांगना है कोर्ट में जाओ, हर एक चीज़ के लिए कोर्ट में जाओ, मतलब ये बाद में जो होता है करेक्टिव करेक्टिव मेंटेनेंस जो होता है ना, वो टाइप का अपना सिस्टम का मेंटेनेंस, मतलब रेड लाइट थियरी, कोर्ट्स, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ ही सबसे ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर जुडिशियल कंट्रोल, और पॉलिटिकल न्यूट्रल इंडिपेंडेंट होता है कोर्ट, वो भी उसका कर्व एंड कंट्रोल ऑफ द स्टेट। नाउ कमिंग टू द ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट जैसे बताया, ग्रीन लाइट रिलेटेड टू द वेलफेयर स्टेट। जिसका जो रेड लाइट का क्रिटिक्स एंड चैलेंजेस था, थियरी था, वो ग्रीन लाइट में रिमूव कर दिया। इट इज बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, दैट इज मैंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ये सब ग्रीन लाइट थियरी है, लोगों को ज़्यादा लोगों का बेनिफिट के लिए काम किया गया है। काउंटर थियरी, यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, benefit of the in benefit of the community and entirely legitimate, वर्क लेजिटिमेट है, मतलब एज पर लॉ है, बट इन बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी, मतलब कोर्ट लॉज वो सब देखो, प्रॉब्लम होने के बाद उसको पनिशमेंट दो, वो सब नहीं। पहले से ही क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट पहले से ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके रखेगा। रोड पे गड्ढा है, उसके बाद में उसको बुझाने से अच्छे पहले आइडेंटिफाई करना है कहाँ कहाँ पे रोड वीक हुआ है, तो पहले से ही मेंटेनेंस करते रहना है। दैट इज कॉल्ड ग्रीन लाइट थियरी, बेनिफिट ऑफ पीपल, होने के बाद नहीं, होने के पहले प्रिवेंटिव, दैट इज कॉल्ड ग्रीन लाइट थियरी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ टू फैसिलिटेट गवर्नमेंट। फिर हम लोग जाएंगे, अभी उड़ी मारेंगे अंबर लाइट थियरी में। अंबर मतलब इन कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन लाइट थियरी एंड अंबर लाइट थियरी। तो टू डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेज बिटवीन टू पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ बोथ थियरीज, और दोनों का पॉजिटिव। रेड लाइट थियरी कैसा है, फायर वॉचिंग, उन्होंने का अच्छा है फायर वॉचिंग। फायर वॉचिंग मतलब आग लगाए, हम लोग सब देख रहे हैं, देखने के बाद में जो करना है वो करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रेड लाइट थियरी। और ग्रीन लाइट थियरी मतलब फायर फाइटिंग, फायर लग गया तुरंत बुझाओ, फायर लगा पूरा तैयारी, फायर फाइटर गाड़ी तैयार है वहाँ पे, मतलब फायर लगने लगने से पहले ही फायर ब्रिगेड तैयार है। अंबर लाइट थियरी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज फायर वॉचिंग एंड फायर फाइटिंग बीच का। Harlow and Rowling green light theory does not wish to suggest that it favors unrestricted arbitrary action by the state. In fact, it does not rebuke the rigidity of red light theory to some extent. There are the various tenets, principles of the theory. कौन सा अंबर theory? Law is both discrete and superior. Law is controlled degree of discretionary authority, safeguard a particular vision of human rights. Then let us go to the uh, red light judicial review controlling the administrative action. Green light theory acknowledges the necessity judicial review. Red light consider law as superior, and green light thing is the law is not superior to the administration. It is a politic, and red light theory appears politically conservative. Green light politically progressive. Green light theory. रेड लाइट आंसर्स एवरीथिंग लेज इन कोर्ट, जब जो भी है कोर्ट में, जो भी है कोर्ट में। एंड ग्रीन लाइट थियरी बताता है ये सब ओल्ड फैशन ही करके। तो ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट थियरी ये सब इंग्लैंड में डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, 12,015 में मैग्ना कार्टा जो किंग ने ये सब किया था, स्पेशल कमिटी कमीशन फॉर्म किया था मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में, तो वो टाइम पे सब हुआ था। स्लोली इसका बिगिनिंग हुआ, देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, देन यूनाइटेड स्टेट्स में हो गया। 20th सेंचुरी में ये जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट बहुत ही आगे बढ़ गया। फ्रांस में 1789 रिवोल्यूशन में आ गया। देन इंडिया में तो अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस और अभी अभी तो और ज़्यादा बढ़ रहा है कि वेलफेयर स्टेट। देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, ये डिफरेंस हमको दिखना है। Constitutional law is as per the constitution. Administration law is the statute, case laws, administrative regulations. So protects individual rights and liberties as per the constitution. Administrative law का implement and enforce law, लॉज को कैसे अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करके इन बेनिफिट ऑफ पीपल में देखा जाए, वो उसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ।
uh, फॉर एग्जांपल आई कैन अगेन टेल यू दैट यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस दिया हमको, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपनी लॉ, इसका सब सिलेबस दे दिया। अब सिलेबस को अच्छे तरह से हमको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उसको सिखाना है। तो आप टीचर्स के साथ टीचर्स को ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा, मतलब ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा इन द सेंस दे हैव टू टीच इन अ वे दैट स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड, स्कोर 350 मार्क्स आउट ऑफ 500 इन एग्जाम। तो उनको सेल्फ इनिशिएटिव लेना है, या फिर स्टूडेंट्स को भी यूट्यूब ट्यूशन एज आई सेड अर्लियर उसका गाइडेंस लेना है। तो काम आगे बढ़ेगा। हाँ, सिर्फ सिलेबस बना दिया, हाँ ये पढ़ो, ऐसे करने से दैट इज अ लेजी फेयर स्टेट। एंड सेकंड जो है वो वेलफेयर स्टेट, जिसमें वेलफेयर हो रहा है स्टूडेंट्स का, सिटीजन्स का। ओके, सो एवरीबडी इज गुड एट देयर स्टेज, बट ओवर अ पीरियड द सिस्टम प्रोग्रेसेस and made beneficial to the citizens. Then sources of law, scope, purpose, enforcement, ये सारा कुछ आ रहा है। Then principle of legality, English law, and influenced Indian administration law. Both English and Indian में principle of legality तो सेम ही है। Judicial review, fundamental rights, both England and India. Then basic constitutional principles, administrative law branch deals with the legal principles, the constitutional principles of administrative law, rule of law, separation of powers। क्या क्या है रूल ऑफ लॉ? लॉ का ये होना चाहिए, पावर सेपरेट होना चाहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, प्रिवेंटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स, life, liberty, property, without the no person shall be deprived of life, liberty, property without due process of law, fair and transparent procedures, guidelines and limitations, non-delegation doctrine, in judicial review, fairness and equity, transparency and accountability, protection of fundamental rights, respect, uphold the individual fundamental rights, the freedom of speech, religion and private speech, sovereign community, sovereign immunity, immunity मतलब sovereign को immunity, sue you मतलब वो पहले जमाने में था, you cannot sue the king, king जो बोलेगा सही था, अभी ऐसा नहीं है, we can the in certain cases we can sue the government also for the wrong done by taught by the government. Rule of law, supremacy of law. No one is above the law. Must follow legal framework. Clear and specific, accessible, aware of the rights and obligations, due process, preventive and punitive justice, punish the wrongdoing, but also to prevent, वो दोनों काम करना, अवेयरनेस करना पड़ता है। जैसे टीवी, रेडियो, पेपर्स पे ऐड आता है, अवेयरनेस ऑफ प्रोग्राम, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड इफ यू डोंट फॉलो देन यू विल बी पनिश्ड, प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट टाइप। देन कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट ओवर लॉ कैसा कंसिस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो आज एक लॉ है, कल एक लॉ है, सब चेंजेस हो रहा है। आज एक क्राइम के लिए पनिशमेंट अब एक महीने का, दूसरे बार देख रहा है 10 साल का है, तो इरेटिक हो जाएगा, तो सिस्टम प्रॉपर नहीं काम करेगा। सो लॉ शुड चेंज ग्रेजुअली, नॉट एब्रप्टली। एब्रप्ट होगा तो भी मुश्किल आ जाएगी। तो बिकॉज इट्स द क्वेश्चन ऑफ मेनी crores of people, नॉट एक्सीड द पावर ग्रांटेड, लिमिटेशन है ना गवर्नमेंट पावर का, एक्सीड नहीं होना चाहिए पावर। ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स, देन प्रॉपर बैलेंस एंड सेपरेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबल इन्वायरमेंट, rule of law under Indian Constitution, rule of law, equality before of, rule of law क्या है? Basically non explicitly mentioned, democratic and legal, equality before law, due process of equality, Article 14, due process of law, Article 21, life and personal liberty, procedural due process, नॉन आर्बिट्ररीनेस मतलब आर्टिकल 14 एंड 21, एक को एक रूल अप्लाई होगा, दूसरे को रूल नहीं होगा, बेसिकली 14, 21। देन जुडिशियल रिव्यू, पहले सबको इक्वल है, फिर
Due process of law है, non arbitrariness है, judicial review, the separation of powers, that is legislature, executive, judiciary, legislative law making, executive law implementing, judiciary law controlling, और लॉ जो समझते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, दोज बॉडी, कोर्ट बॉडी, लेजिस्लेटिव लिमिटेशंस, आर्टिकल 13 क्या है, लॉज विच आर, हमने पढ़ा था, लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट और इन डिरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर void. Then coming to the protection of the fundamental rights, freedom, speech, religion, equality, transparency and accountability. Transparency and accountability integral to the rule of law. Access to justice, Article 32 and 226, Supreme Court and High Court. You can appeal for the violation of fundamental right, and the writs can be issued. तो जैसे मनिका गांधी अभी इसका केस लॉक दिया, मनिका गांधी ने मनिका गांधी का पासपोर्ट जब्त किया था, तो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था। 21 उसको इंडिया के बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं था। सो दैट इज वन केस। देन केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वो क्या था, आई मीन द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। Then Minerva Mills versus Union of India cannot impose an emergency without following the procedure. किसी को लगा तो भी ऐसे ही इमरजेंसी नहीं हो सकता, प्रोसीजर लॉ फॉलो करके इमरजेंसी सम पॉलिटिकल पार्टी कैन डिक्लेयर। इन सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी पावर, सब उसका अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर्स। यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इंडिया इनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको सब क्लियर कर दिया है। United States, for example, President often has lot of influence over the legislative branch and the Supreme Court. The United States दो से डेमोक्रेसी है, बट वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, वहाँ पे प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा पावर्स है कि उसके अंडर जुडिशियरी होता है। सो ही कैन बिट अल्टर द डिसीजंस और प्रेसिडेंस गिवन बाय द जुडिशियरी। इंडिया में वो नहीं होता है, इंडिया में तीनों इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब मोर और लेस इंडिपेंडेंट, नॉट टोटली इंडिपेंडेंट, उनमें भी इंटरकनेक्शन है, ओवरलैपिंग है। बेनिफिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, इट इज मोर डिफिकल्ट टू पावरफुल, देन चेक एंड बैलेंस होता है उसमें, तीनों इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। then individual rights, then inefficiency can make it difficult for government to act quickly and effectively. जब आप इंडिविजुअल पावर देते हैं तीनों को, मतलब लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, तो अलग अलग पावर दिया है तो डिफिकल्ट होता है डिसीजन लेना, कोई एक्ट पास करना, इम्प्लीमेंट करना। वो ग्रिड लॉक आ जाता है उसमें, टाइप कभी कोई सिचुएशन लॉक हो जाता है, मतलब ये सबको बड़ा बोलता है, ये बड़ा बोलता है, ये बड़ा, तीनों तीनों ब्रांचेस अपने कोई पावरफुल दिखाते हैं। बट देयर इज ऑल्सो वे आउट आने के लिए कोई ना कुछ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिया हुआ है। इन सेपरेशन ऑफ पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, इंडिया, इसमें सब है। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या 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 है सेपरेशन, प्रेसिडेंट इज एट द अपर, हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, सबसे मैक्सिमम पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक लॉज विदाउट द कंसेंट ऑफ सेनेट, वहाँ पे सेनेट होता है, सेनेट है, कांग्रेस है। सेनेट मतलब अपना पार्लियामेंट, उसके कांग्रेस कैन नॉट अपॉइंट जजेस विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। Then Congress is a Supreme Court cannot invalidate law passed by the Congress. ये सारा कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में क्या, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द कांग्रेस एंड द सेनेट। सेनेट मतलब हायर बॉडी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाला लोकसभा एंड राज्यसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट, ये सब यूएसए का थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है उनका। देन इंग्लैंड में क्या है, मोर और लेस इंडिया जैसा है, बट parliament is supreme, and it can pass laws that override decision of a court and strictly enforce, वहाँ पे होता है। parliament cannot appoint judges without the consent of queen। अभी रिसेंटली क्या रूल चेंज हो, queen cannot make laws। इंडिया सेपरेशन ऑफ पावर्स है, स्ट्रिक्टली एनफोर्स, और ओवरलैप भी होता है पावर्स। प्रेसिडेंट पावर टू अपॉइंट जजेस to the Supreme Court. Supreme Court can strike down laws that it believes are unconstitutional, मतलब इसमें फंडामेंटल राइट को
एब्रोगेट किया है, फंडामेंटल राइट को ओवरराइड किया है, वो लॉज सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है. प्रेसिडेंट कैनॉट मेक लॉज विदाउट कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट. तो ये सारा क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, regulatory functions, making the enforcement, safety of food, environment, financial industry, then category regulatory, facilitative, supporting. Regulatory making and enforcement, facilitate providing servicing, supportive provide support, the legal advice, financial service, education, environment. Now tripartite तुमको मालूम है तीन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. ये हमारा तीन ब्रांचेस है. तो ट्राइपार्टाइट फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. रेगुलेटरी facilitate support, regulatory making enforce rule on regulations, so facilitate provide services, supporting provide support. Judicial, legislative and judicial functions distinction. The legislative and judicial function का जो law making and law controlling का distinction. Legislative function is to make laws and judicial function is to interpret it, and the executive function is to enforce it. The difference is given feature legislative function, judicial to make legislative make laws, judicial interpret the laws. Judicial legislative parliament or congress can make the congress in the yes parliament India. Judicial functions court systems. The legislative elected representatives are making the law. Judicial by the judges. Legislative debates and voting. And judicial intent precedence उसके ऊपर होता है. Then binding on everyone जो laws making law made is binding on everyone. And judicial parties to the case binding on the party जो दो पार्टी के बीच में इशू है डिस्प्यूट है वो दो पार्टी उसमें बाइंड है. देन कमिंग टू द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. अभी तीन ब्रांच का हर एक का दो दो का डिफरेंस हमको डिस्टिंक्शन और डिफरेंस देना है कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल. नाउ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव इट इज लॉ मेकिंग एंड लॉ इम्प्लीमेंटिंग. Then going to the foreign relations, executive bank handles law implementing, handles the foreign affairs including diplomacy, international agreement, treaties, negotiations, etc. Quasi judicial functions specific to the particular subject. Then judicial functions and quasi judicial functions. Judicial interpret and apply law. Quasi judicial industries or activities or judicial functions by court and by judges. वहाँ पे क्या होता है quasi judicial by agencies and officials. Then coming to the model two delegated legislation. Delegated legislation, subordinate legislation, express delegation, implied delegation, check and balance delegation. Reason for growth of delegated legislation. Modern legislation is very complex. Administrative agencies in some countries legislations are often deadlocked. And then constitutional validity and delegated specific circumstances. Delegation is authorized by constitution. Then coming to excessive delegation, doctrine of excessive delegation. Violate the separation of power, the administrative agency too much power, ज़्यादा power दिया तो. Then that is too broad, too vague. Then coming to the form of types of delegated legislation, regulations, bylaws, statutory instruments, safeguards and controls on delegated legislation, transparent and accountable, publication, public consultation, judicial review, parliament scrutiny, accountability, and of administrative agencies. Then going to the unfairness, irrationality, and ultra vires. That is, judiciary can review delegated legend on the number of grounds. Ultra vires power exceed किया है, irrational है मतलब out of not rational है, unfairness fair नहीं है.
Then legislature control over delegated legislation, regular requirement consultation, scrutiny, other controls, executive control, approving delegated legislation, amending or revoking delegated legislation, public participation, petition. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो नेचुरली होता है कॉमन लॉ ट्रीटेड फेयरली नॉट कोडिफाइड इज अ कॉमन लॉ एंड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फेयर हियरिंग रूल अगेंस्ट बायस right to be represented by a lawyer, right to silence, right to appeal. Definition, nature of scope, natural justice, procedural fairness. Individuals are treated fairly in administrative and judicial proceedings, not codified, but they are derived from the common law. Two main principles of natural justice, right to be fair hearing and right against bias. There is a right to challenge fair hearing, right to challenge, right against bias. Decision makers be impartial. Then coming to the rules against bias, nemo judex in causa sua rule. Principle of natural justice has required that decision makers be impartial and unbiased. Decision makers cannot have any personal interest in the outcome of case. इसमें दे ऑडी अल्टरम पार्टम मतलब दूसरे ऑडी मतलब ऑडिबल सुनना अल्टरम अदर एंड पार्टी दूसरा पार्टी को सुनना हियर द अदर साइड एक ही साइड देख के आप जस्टिस नहीं दे सकते दोनों साइड आपको सुनना पड़ेगा और ये अल्टरम पार्टम में प्रिंसिपल क्या है नोटिस देता है अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड इम्पार्शियल डिसीजन मेकर राइट टू रिस्पॉन्ड राइट टू डिसीजन ये सारा उसमें पोस्ट डिसीजनल हियरिंग एडवांटेजेस और पोस्ट डिसीजनल हियरिंग मतलब डिसीजन तो दिया तो अपील दैट इज व्हाट कवर्ड इन दिस देन रीजन डिसीजन रीजन देना पड़ेगा डिसीजन अपनी डिसीजन दिया है तो उसका रीजन देना पड़ेगा एज पर विच लॉ क्या स्टैच्यूट क्या आर्टिकल क्या है तो वो सब आपको बताना पड़ेगा क्या प्रेसिडेंस है उसके मुताबिक आपको बताना पड़ेगा दैट इज द रीजन फॉर decision and then providing clear and concise reason for decision refuting any opposing argument सब effect of failure of natural justice natural justice fail होगा तो consequences है तो क्या हुआ breach of natural justice no legal effect natural justice can be quashed by court circumstances of the case, serious consequences of the parties involved. Students who is expelled from school without being fair hearing may be able to have expulsion overturned. मतलब उसका जो निकाला गया है उसको रिवर्स कर सकते हैं इन रेस और रिलीजन के बेसिस पे एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नहीं रख सकता है अरेस्ट किसी को भी विदाउट एनी इंटीमेशन क्राइम उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट एब्सोल्यूट ऐसा नहीं कि नेचुरल जस्टिस सब जगह हुआ ओवर रिडन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी then here are some of the most common exceptions to the principle of natural justice common exceptions क्या है common exceptions तो urgency waiver opportunity to make representation public interest सारा कुछ है मॉड्यूल 3 में हम आ गए अभी हमको फटाफट आगे बढ़ना है अभी ट्रिब्यूनल्स इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स ट्रिब्यूनल्स आपको मालूम है ट्रिब्यूनल मतलब एक्सक्लूसिव उसका काम एक ही काम है मतलब जिस जीएसटी टैक्स ट्रिब्यूनल हो गया फिर और क्या कोई कोई अलग ट्रिब्यूनल्स है ट्रैफिक ट्रिब्यूनल है सो सेपरेशन ऑफ पावर्स parties involvement of government judicial functions then person or institution authority to judge adjudicate and determine claims or dispute whether or not have tribunals it tribunals can be defined as a judgment seat or court of justice board of committee that is a quasi judicial body specific उसको फंक्शन दिया है वही काम करेगा कोर्ट में सब एनी टाइप का केस आ सकता है बट उसमें भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट अलग होते हैं दैट इज ओ डिफरेंट स्टोरी देन 42nd अमेंडमेंट में ट्रिब्यूनल्स का फॉर्मेशन हुआ था दैट इज स्पेशल कॉसी जुडिशियल बॉडीज फॉर द फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ स्टैच्यूट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट
State Administrative Tribunal, SAT, Joint Administrative Tribunal.